Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, आर्थिक खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। प्रकाश, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका A स्वागत। warm welcome, Prakash. नमस्कार। चर्चा शुरू करेंगे राजेश, मगर उससे पहले हेडलाइंस। Benchmark domestic indices snap losing streak. Sensex gains nearly 400 points, Nifty ends above 25,250. Major Asian markets end in positive territory, European markets trading with gains. देश के And in Indian bullion market, gold and silver prices decline. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज गिरावट का सिलसिला टूटा। सेंसेक्स लगभग 400 अंक बढ़ा, निफ्टी 25,250 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के प्रमुख शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए, वहीं यूरोपियन बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं और भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आई। Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. श्रोताओं, आइए रुख करते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आज प्रमुख Benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty, ended around 0.5% up today amid positive global cues rebounding from a 3-day losing streak. Markets opened on a strong note but gave up part of their initial gains during the afternoon session. However, renewed buying interest in the final hour of trade helped the indices close higher. The Sensex surged 398 points to close at 82,307, while the Nifty gained 132 points to settle at 25,290. The broader market at the Bombay Stock Exchange also edged up. The mid-cap index climbed almost 1.3%, while the small-cap index added over 1.1%. देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद आज लगभग 0.5% के साथ बंद हुए। ये वृद्धि सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण देखने को मिली। सत्र की शुरुआत सकारात्मक हुई, लेकिन दोपहर आते आते बाजार ने अपनी गति खो दी। हालांकि कारोबार के अंतिम घंटे में लिवाली हुई, जिसके कारण दोनों ही सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 398 अंक बढ़कर 82,307 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 132 अंक बढ़कर 25,290 पर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में भी तेजी दिखाई दी। मिड कैप सूचकांक में लगभग 1.3% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 1.1% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 24 कंपनियों के शेयरों ने मुनाफा कमाया। सबसे अधिक लाभ पाने वालों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 3.7% से अधिक, टाटा स्टील 2.7% और अदानी पोर्ट्स के शेयर लगभग 2.6% बढ़े। सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाले शेयरों में सर्वप्रथम इटर्नल 2.6%, टाइटन 1.5% और आईसीआईसीआई बैंक में 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। Among the sectoral indices of the BSE, 20 out of 22 sectors ended on a positive note. In the top gainers, PSU Bank climbed over 2.4%, capital goods increased 2%, and industrials rose nearly 1.8%. On the downside, realty fell 0.7% and consumer durables dipped over 0.4%.
The overall market breadth at the BSE was positive as shares of 2,951 companies advanced, 1,280 declined, and 154 remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 8 पैसे बढ़कर 91 रुपये 62 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ। दुनिया की अन्य 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान 98.72 पर चल रहा था। Prakash, on a day when the Sensex and Nifty have rebounded after recent sharp declines, what does today's price action tell you about the underlying market sentiment and whether this is a genuine trend reversal or just a technical pullback? It's a technical pullback as also an event-based reaction. A reaction to somewhat easing of tensions, tariff tensions and mainly tariff tension, epicenter of which this time around was US-EU. European Union. So somewhat because yesterday's somewhat softening of stance by President Trump vis-a-vis Europe was visible yesterday in his speech at World Economic Forum meeting at Davos, and the market was desperate to somehow get some positive feel, and it did get it, and that's why markets all over the world today. So I would describe it a kind of a relief rally supported by technical oversold market and then somewhat easing of tensions. And also today the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, met with EU ambassadors to advocate for stronger India-EU ties to de-risk the world economy, quote unquote, ahead of the top EU leaders' visit for Republic Day celebrations and for a landmark summit. So that too is contributing towards positivity in the market. Well, it depends on how you look at it. When you say de-risking from where? De-risking from the US. So India as also European Union, both are seeking de-risking. In fact, we have a story as we go along and we will discuss this in detail. That's how it works. प्रकाश, इस बीच अगर हम बात करें नए निवेशकों की, तो नए निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह है? किस तरीके से वो अभी अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं या जिन्होंने निवेश ऑलरेडी किया हुआ है वो निकल जाएं बाजार से या क्या? बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी ये होगी कि जो डेली ट्रेडिंग करते हैं उससे बिल्कुल दूर रहें, वो तो बड़ा हाई रिस्क गेम है। दूसरी एडवाइस ये होगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म स्टेबल इन्वेस्टर्स हैं, घबराएं नहीं, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। स्मॉल कैप ये मत जाइए कि डेफिनेशन स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है। अच्छी कंपनी जिनके प्रमोटर्स अच्छे हैं, जिनका ब्रांड नेम वेल एस्टेब्लिश्ड है, जिनकी मार्केट में कुछ साख है, उन कंपनियों के साथ जुड़िए और अपने पोर्टफोलियो को, जितना भी बड़ा आपका पोर्टफोलियो, छोटा हो बड़ा हो, डज नॉट मैटर, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। एक ही सेक्टर में ये नहीं आपने 100 रुपये लगाए तो उसमें 80 रुपये आईटी में ही लगे हुए हैं, ये नहीं आपके उस 100 रुपये लगाए तो 80 रुपये आईटी ऑटोमोबाइल में लगे हुए हैं जी। तो आप डाइवर्सिफाई कीजिए तो डी रिस्क हो जाएगा अपने आप में, और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए और बने रहिए। ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टेरिफ, ये पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स होती हैं ये आती हैं जाती हैं, आप बने रहिए। ये सेक्टर स्पेसिफिक भी आप कोई संभावना देखते हैं? सेक्टर स्पेसिफिक का मूल मंत्र मैंने बोला डाइवर्सिफिकेशन है। So how are, since Prachi asked you about these sector specifics after today's move, what according to you, banking, IT, manufacturing or consumption, and how are their earnings and valuations aligning with the broader India growth narrative? Well, we have on the one hand the India growth story, which apparently appears to be intact. Then we also have an issue with the corporate earnings. We are in the middle of corporate earnings season,
we haven't been getting a great story there. So the corporate earnings have not been showing a trend which could enthuse the investors, especially the foreign institutional investors, who have been on selling spree for quite some time now. And two things must happen. One, earnings must improve. The other, our valuations must correct themselves to the somehow the align with the earnings. After all, several Asian markets have done well. And it is not that there's something gone wrong with India's growth story. India growth story remains intact. The only problem is that we were running way ahead, and then correction is taking place. When correction has to take place, the market tries to find some excuse. And here, it's not an excuse, it was a big upheaval, sort of, so to say, what we are witnessing around us right now. तो प्रकाश, बाजार को लेकर के आपकी राय जो है वो सकारात्मक है या आप नकारात्मक? हम व्यवहारिक हैं. जो व्यवहार है, जो चल रहा है मार्केट, उसी को उसी तरीके से हम देखते हैं. नॉट पेसिमिस्टिक, नॉट ऑप्टिमिस्टिक, जस्ट रियलिस्टिक है. रियलिस्टिक. और उसी के चलते मैंने आपसे जिक्र किया, जो मैंने आपको एडवाइस दी आपके इन्वेस्टर्स को, जी, कि आप रियलिस्टिक होके बात कीजिए, डरिए मत, घबराइए मत, और पैनिक में आके बिल्कुल मत बेचिए अपना सामान. Prakash, the reality you're talking about, be yourself and express yourself. And I think at Davos, India has really expressed itself, and we are the toast of the world over there. And a lot of conversations around supply chain diversification and manufacturing is taking place at Davos. What are the one or two most concrete India-centric outcomes that you have registered with, and what could translate into actual FDI or policy shifts in 2026-27? Let me answer FDI issue first. Sure. What has happened is... Let me add to this. Yes. Will the FIIs be encouraged now to come to India? Well, FII is a purely day-to-day, very dynamic, very fast-moving, market-driven kind of a momentum they will chase. So they will buy Hong Kong, sell US, they'll buy Europe. Makes a pure business sense. Pure for them. business sense. So far as the foreign direct investment is concerned, which is considered to be stable, which is considered to be giving much more stable value to your growth story, we have seen quite a few number of very impressive FDI deals, especially in the financial sector. You have some banks, smaller level banks, which have attracted FDI from Japanese, from several other countries, where the FDI deals have been signed even well before Davos. So you already are seeing FDI take interest in sectors where they see value proposition. So to that extent, and so far as the Davos story is concerned, again the broad takeaway from Davos would be that there it was, everybody was trying to fend itself. How do I find myself in a situation where I am de-risked from the supply chain issues, I am de-risked from the upheavals, and I am trying to see where can I find trade partners, dependable, reliable trade partners. So Davos offered some kind of a platform, but that's only a touching point. We need to work hard. After all, we are cementing very well with the European Union. After all, the commonality of issues are there when it comes to Europe. They are at the receiving end. We are not that much at the receiving end, but we also feel the heat somewhere. 50% tariff is a huge tariff we are facing. So, and similar situation with Europe. So there is a commonality. So aren't you positive about what Mr. Trump said at Davos, that he thinks our Prime Minister is a great person, and that positive FTA is on its way? Well, positive for whom? Positive for America or positive for us? Perhaps it is because of that it has to be today a the market is... well. So
Positive for whom? It has to be a win-win situation. For both. And a win-win situation is carved out, is hammered after hardcore negotiations by our negotiators. So let's see how it works. Whether the deal which he says he is expecting a good deal, so let's hope it's a good deal when we get to see it. रुक करते हैं श्रोताओं अब एशिया और यूरोप की बाजार की तरफ। आज प्रमुख एशियाई शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। जापान का निकेई 1.7% से अधिक उछला। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लगभग 0.9% बढ़ा। दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में पिछले वर्ष यानी साल 2025 में 1% की वृद्धि हुई, जबकि साल 2024 में 2% की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि बैंक ऑफ कोरिया के अनुमानों के अनुसार निर्माण क्षेत्र में मंदी के कारण तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में 0.3% की गिरावट आई। रुक करते हैं सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स की तरफ, जो कि 0.4% बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक लगभग 0.2% बढ़ा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.1% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। आज प्रमुख यूरोपीय सूचकांकों में भी तेजी देखी गई। जर्मनी का डैक्स लगभग 1.4% बढ़ा। फ्रांस के कैक में लगभग 1% की बढ़त रही और लंदन का फुत्सी अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% बढ़त के साथ नजर आया। Major U.S. indices ended higher yesterday as investors' confidence improved after President Donald Trump rolled back tariff threats against European nations, saying that a framework for a future deal had been formed over Greenland and the Arctic region. The Dow Jones Industrial Average surged 1.2%. The Nasdaq Composite Index as well as the S&P 500 ended nearly 1.2% up. Moving on, Denmark Prime Minister Mette Frederiksen has stressed that her country cannot negotiate on its sovereignty. The remarks came amid US President Donald Trump's statement that he had secured a framework of a future deal on Arctic security with the head of NATO. Yesterday, Mr. Trump scrapped the tariffs he had threatened to impose on 8 European nations to press for US control over Greenland, a semi-autonomous territory of NATO ally Denmark. It was a dramatic reversal hours after he insisted he wanted to get the island including right, title and ownership. He said additional discussions on Greenland were being held concerning the Golden Dome missile defense program, a multi-layered $175 billion system. Earlier, the European Parliament had decided to suspend work on the European Union's trade deal with the United States in protest at US President Donald Trump's demands to acquire Greenland and threats of tariffs on European allies who oppose his plan. Now, in actual reality, Prakash, he says that he has secured a framework of a future deal of Arctic security with the head of NATO. Well, now, you think that yes. Has the things kind of settled now, or they could be moving in a peaceful manner henceforth? Very difficult to say they have settled, because what he says is that the framework is ready. But what you see today in Europe, the US-European trade deal is in limbo. It's been almost put in the ice cold, and it was much touted trade deal. Then when it comes to his stance on Greenland, while he has gone back on the threat of tariffs against those nations which were taking tough stand on Greenland, but he has not mended his what is called statement that he wants to buy it. He is willing to pay a price. He wants to buy Greenland. Now buying, he wants the right, title, and ownership. So imagine in a world we are living today in 21st century, do you go on buying nations like this? You, after all, however big or small nations, you are a nation. Can you go on trading nations like this? So that is what is at stake in Europe versus US, and we can only wait and watch what comes out of it. What we are watching is
that Europe is now giving a pushback, a kind of a solid pushback, and it remains to be seen how the US reacts to this pushback. So, the projection of the unified front by the European Union, and also they coming over to India and saying that we're going to deal with India come 26th of January, we are going to have a deal with European nation. Are these all to counter President Trump? Well, not to counter, to de-risk. After all, they have been laid back over the years. The European nations thought that as if there is a big ally of us who look after us. And in a way, in the long term, they would realize that Trump has done them well. Trump has woken them from their slumber. That look, you have to fend for yourself. There are no permanent friends and foes. Yeah. Let's hear what President Trump had to say about our nation in the story with Prachi. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में विश्व आर्थिक मंच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। प्रधानमंत्री को अपना खास दोस्त बताते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने भरोसा जताया कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता जरूर होगा। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर जारी गतिरोध दूर करने के लिए बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में तनाव के बावजूद राष्ट्रपति ट्रंप के बयान में सकारात्मकता देखने को मिली। संभावित व्यापार समझौते के बारे में पूछे जाने पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता होने जा रहा है। प्रकाश जी, क्या भारत किसी तरीके की असमंजस की स्थिति में आपको नजर आता है? नहीं, ऐसा कुछ दिखता नहीं, लेकिन ये है कि अगर ट्रंप साहब ने कहा है कि हमारे मोदी जी उनके बड़े अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो एक जो नेगोशिएशंस का माहौल होता है वो ठीक हो जाता है, पॉजिटिव रहता है। तो पॉजिटिव माहौल जब दोनों तरफ बिल्ड होता है तो फिर आपकी नेगोशिएशंस जो होती हैं वो बड़ी अच्छी तरह से चलती है। किसी भी नेगोशिएशंस में गिव एंड टेक होता है, खासतौर पर ट्रेड डील्स में तो गिव एंड टेक जरूरी है। आप अपनी मार्केट कुछ देते हैं तभी दूसरा पक्ष आपको अपनी मार्केट देता है। दो तरफा इंटरेस्ट है ऑब्वियसली, क्योंकि कोई अपने दरवाजे ऐसे कोई खुला नहीं छोड़ता जब तक आप उनको अपने भीतर नहीं आने देंगे। तो तनाव में तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी होगा ही, क्योंकि टैरिफ अगर लग रहे हैं तो सामान तो वहां भी महंगा हो ही रहा है। वो प्रेसिडेंट ट्रंप अपने आप को प्रोजेक्ट तो ऐसे करते हैं, हमें कोई तनाव नहीं। कल उनकी जो ट्रंप की स्पीच थी डेवोस में, हालांकि इकोनॉमिस्ट और बाकी कमेंटेटर्स उनसे एग्री नहीं करते जी, लेकिन वो तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस करने में और वास्तविकता में तो काफी जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर वहां से किस तरह के हैं, बट ये बात जरूर है कि ये सब चलते हुए भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स हैव डन वेरी वेल जी। स्टॉक मार्केट्स हैव डन वेरी वेल एंड लार्जली ड्रिवन बाय द एआई काइंड ऑफ ए यूफोरिया। उसने काफी चीज हेल्प करी है, तो काफी सारे कुछ फैक्टर्स उसके फेवर में भी जाते हैं। तो अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन वो कोई असमंजस तो उनके चेहरे पे तो दिखाई देता नहीं। और एक बात और बताऊं कि उनको यूएस लॉ मेकर्स की काफी हद तक सपोर्ट भी है। तो ये बुद्धिमान आदमी की ये नहीं सोच होनी चाहिए कि ये कुछ नहीं है, वो अपने आप हो जाएगा। नो, जैसे मैंने जिक्र किया, वी हैव टू बी रियलिस्टिक एनफ कि भाई अगर वो एक ओवरऑल, आफ्टर ऑल ट्रम्प में बी देयर फॉर 3 years, बट वी हैव टू एंश्योर, वी हैव टू सी द रोड मैप अहेड। जब नेशंस आपस में डील करते हैं तो दूर की सोचते हैं कि वहाँ कैसा माहौल डेवलप हो रहा है, किस तरह का पॉलिटिकल माहौल डेवलप हो रहा है। उसी तरह से देशों को, हमको भी अपनी रणनीति बनानी चाहिए, और आई एम श्योर हम लोग बना रहे होंगे। Since you, Prakash, talked about realistic environment and how we need to be realistic, as a new global trade map emerges in response to the changing US tariffs and trade policies, what strategic advantages and vulnerabilities does India face over the next few months or years ahead? Well, strategic advantage is that we have a 1.4 billion people market.
we are a young nation. We are energetic nation. We are full of aspirations. Our education, we have a good prowess in technology, engineering. Our executives are doing wonderful job in Silicon Valley. We are there at the technological frontiers. So these are the strategic advantages which we should and we can leverage when we are dealing with the rest of the world. Vulnerability, yes, because the supply chain disruption is there, facing us is there, and then you have we have to see through this phase and then ensure that the winds that are blowing are we are able to face them. And budget is round the corner. We would like to see whether there's a reset visible in the budget as well, because do we depend more now on domestic consumption, on domestic investment? That should be and will be visible, I hope, in the forthcoming budget. Moving on, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar today highlighted that stronger India-EU relations will de-risk the world economy by cooperating on resilient supply chains. He added it will stabilize the global order through stronger trade, mobility and security partnership. Interacting with the ambassadors of EU in New Delhi, Dr. Shankar actually spoke about the current state of the world, the volatility and instability as the new normal. What is your take on that? Well, if it's a new normal, I think it's a realistic that. If it's a new normal, then we got to learn how to live with it, and then we have to find trade partners, our strategic partners. We have to widen our base. And we can't depend only on one segment or the one section of the allies. We have to find new friends and ensuring at the same time we don't make enemies. वो कहते हैं ना आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो जिस तरीके की आवश्यकता अभी हमें लग रही है, तो मैं आपकी बात को दोहराती हूँ कि वो उस तरीके का कोई आविष्कार होने की संभावना है. हमको ये ध्यान रखना है कि हम दोस्त बनाएं, हाँ, और बिना दुश्मनी के दोस्त बनाते ही चलें. Global crude oil prices declined today as investors assess the supply and demand outlook. Brent crude was trading 1.5% down at $64.27 per barrel, and WTI crude was also trading around 1.6% lower at $59.67 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, gold and silver prices dropped today from a record high touched in the previous session. The decline is attributed to profit booking and easing geopolitical tensions. The gold and silver exchange traded funds fell up to 16%, mirroring the fall in precious metal prices. Meanwhile, in the Indian bullion market, the 24-carat gold was trading 1% down at 1,52,280 rupees per 10 grams. Silver was trading 2.1% down at 3,10,460 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में ताज़ा समाचार मिलने तक फरवरी अनुबंध वाले सोना 0.8% घटकर 1,51,593 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, और मार्च अनुबंध वाली चांदी लगभग 2.9% गिरकर 3,09,248 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आने और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद. And before we close, the headlines once again. Benchmark domestic indices snap losing streak. Sensex gains nearly 400 points. Nifty ends above 25,250. Major Asian markets end in positive territory. European markets trading with gains. And in Indian bullion market, gold and silver price decline. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें. Market Mantra.